विश मैं और कर सकती, लेकिन आप रोबोट को तो आप एक बाउंड्री है जितना आप कर सकते हो और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो. बट दैट्स द चैलेंज, यू नो. सो it was interesting to play a robot who is so human-like, so close to being a human being कि आर्यन जो कि एक robotics engineer है, he falls in love with her, you know, and so obviously she gives the feeling of being an absolute human, but then she's not, you know. So that fine line was there, and that was what was exciting for me. And I think हर बार हम जब टेक कर रहे होते थे मैं सोचती थी यार ये ज़्यादा रोबोटिक तो नहीं हो रहा है या ये ज़्यादा ह्यूमन तो नहीं हो रहा है. सो वो खुद को क्वेश्चन करना कॉन्स्टेंटली, वो बैलेंस फाइंड करना वॉज आई थिंक द एक्साइटिंग बिट. सिफ्रा इन द बिगिनिंग टू मी वॉज अ लिटिल सफोकेटिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगा था मेरे हाथ बांध दिए किसी ने और अभी बोला कि एक्टिंग करो. बट एज वी स्टार्टेड फ्लोइंग, you know, I would actually hope all of you, while you watch it, even though you enter the theatre knowing that she's a robot, when you watch these two characters, the love story, it's just so, I don't know, it's just so lovely, and you feel like you want them to be together, that I want you to forget that she's a robot. I think you've just added more to our curiosity to watch you on screen as Sifra. Meanwhile, we are sure that you held the perfect balance between the robot and the human. So I have one last question before we go ahead with the media interaction. And Shahid, as you mentioned that you've been in Delhi for a very, very long time, and Kriti, you being from Delhi, your hometown, do you have any special recommendations for each other here in Delhi? You definitely have some chocolate cake. It's not chocolate cake. It's not chocolate. Vanilla strawberry cake. It is the best cake जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी खाया है. मेरी सिस्टर इन लॉ प्रिया वो कहाँ से मंगाती है मुझे अभी तक बताती नहीं है वो, पर जब भी मैं दिल्ली आता हूँ मुझे वो केक मिल जाता है. और आज जब मैं दिल्ली में आया तो कुछ ही देर बाद मेरे होटल रूम में वो केक था और हम सब बैठ के केक खा रहे थे और बहुत अच्छा है वो केक. So I love the cake. I'll give it to you. I don't know where it's from, but I can give you if you're nice to me. If I'm nice to you. If. But okay. My recommendations, I don't know. I feel like एक तो हर दिल्ली वाला ये जानता है बॉम्बे में कि बॉम्बे में मोमोज नहीं मिलते. मोमोज नहीं मिलते. मोमो का सीन क्या है ब्रो? यार ये सीन चीज मुझे मिला है. रेडी वाले मोमोज. बॉम्बे में मोमोज नहीं मिलते हैं. It's a deal. तो रेडी वाले मोमोज. सीन क्या है ये? Better than any dim sums. Just saying. It's like the band Chinese that's better than the Chinese that you have in the restaurant. वो बहुत बड़ी डील है यार. मोमोज बहुत बड़ी डील है ना, है कि नहीं बड़ी डील? है ना यार. लड़कियां तो सब ना ऐसे बोल रही हैं. हाँ हाँ. क्या मतलब है तुम्हारा? When I went to Mumbai, I was like, momos नहीं मिलते. So that meal that's there of every Delhi girl in Mumbai, I was that meal. And I also love New Friends Colony Albek Shawarma. I think that is something जो मैं अपनी मैनेजर को हमेशा बोलती हूँ. हम यहाँ हैं और मैं प्रमोशंस के लिए आती हूँ और ज़्यादातर क्या होता है हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, खाने का टाइम भी नहीं होता है कई बार. So that's something that I like having every time I'm here. And I've been craving for those. So probably in the evening I might have it. Thank you so much, guys. I hope you go ahead with momos and shawarmas and so much more. The chemistry is here with us at the moment itself. And I think that chemistry, your bond together, the trailer and so much more has left everybody intrigued. So I think we should go ahead and without any further ado, let us start with the questions.